और वो चीज़ था क्या कि बेसिकली इन लास्ट क्लास जो हमारा सिस्टम था वहाँ पे हमारे पास जो मैट्रिक्स थी दैट मैट्रिक्स इज ए। ओके, और यहाँ पे आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे भी ये प्रॉब्लम पूछी गई थी, बट किसी ने उसका रिस्पॉन्स नहीं दिया उस ग्रुप पे। ठीक है, तो अब हम समझते हैं कि उस ग्रुप को एक्टिव कर लें। तो ये प्रॉब्लम थी और ये मैट्रिक्स आपने फॉर्म किया था और इसकी हमने जो फाइंड की थी दैट इज आइगन वैल्यूज, एंड दैट आइगन वैल्यूज आर प्लस माइनस टू आई, इमेजिनरी रूट्स थी। ओके, दिस इज प्लस माइनस टू आई। ओके, तो बाय चांस जो इसके आप ये जानते हो, you know that if this matrix A is the coefficient of this all coefficient of this matrix is a real, means this belongs to your real number R, then the eigen values are maybe real, maybe complex. Okay, तो रूट्स जो होंगे इसके रियल रूट्स भी हो सकते हैं और आपके कॉम्प्लेक्स रूट्स भी हो सकते हैं, बट रियल रूट्स के आइगन वेक्टर्स जो होंगे दैट इज ऑलवेज रियल, एंड इमेजिनरी के जो आइगन वेक्टर्स होंगे वो अगर आई विल ऑलवेज क्या होंगे आपके इमेजिनरी ही होंगे। तो इस केस में हमने बाय चांस हमने मैट्रिक्स पी हमने ये लिया, इफ यू सपोज दैट इफ दिस मैट्रिक्स पी, एंड कुछ हमने लिया था इसको एक मिनट ग्रुप में देखें क्या ली थी मैट्रिक्स हमने 2001। हाँ हाँ ओके, हमने ये कंसीडर कर लिया था 20 and 01। ओके, so suppose this be the eigen vector of that। ओके, तो बेसिक मिस्टेक यहीं पे हो गई कि हम सपोज कर लिया कि this be the eigen vector and we let us start with this process and we here take P and P inverse and then multiply and so on, and we finally we get the result, and unfortunately fortunately we get this result is very similar to our the prediction of that. If imaginary roots are imaginary, then there are the nature of this curve are circular or elliptical। ओके, तो बाय चांस वो हमारा रिजल्ट को भी सेटिस्फाई कर गया, रिजल्ट को सेटिस्फाई कर गया, तो हो सकता है कि ये पी हमारी किसी और फॉर्म की रही हो। ओके, तो मुझे थोड़ी कंफ्यूजन हो गई थी, तो शायद मैंने वहां से लिख दिया होगा या मेरे दिमाग में रहा हो, तो हमने इसको लिख दिया। ओके, लेकिन एक प्रॉब्लम जरूर आई थी कि एक स्टूडेंट ने पूछा कि वाकई कि ये लैम्डा अगर ये है तो क्या पी मेरा ये होगा, तो कभी नहीं हो सकता क्योंकि दिस इज योर इमेजिनरी रूट्स, तो पी योर इमेजिनरी। ओके, तो आइगन वेक्टर्स आर इमेजिनरी। तो हमें करना क्या है कि प्रोसेस तो हमने लास्ट टर्म पे हमने डिस्कस कर ही लिया है कैसे हमें करना है, बट यहाँ प्रॉब्लम है कि हमारा पी जो है दैट पी विद डिफरेंट। ओके, एंड रिमेन बाकी प्रोसेस हमारा सेम है, तो आप उससे करके देखें तो आपको रिजल्ट सेम ही आएंगे। तो अगर आप करना चाहें तो हम आपको ओके, तो हम क्विकली अगर हम इसे करें तो इफ दिस बी योर आइगन values, then what is your eigen vector? So here this a minus lambda I, and see if b be the vector, so that is equals to 0. So in this case your matrix is if we take for lambda, if we take for lambda equals to plus 2i, so this becomes 0 minus 2i, and here minus 4, here 1, and here minus 2i. Okay, so this is your matrix, and here your some vector v1 and v2, and that equals to the matrix that is 0 0. Okay, and this corresponds to for lambda equals to plus 2i. Okay, so here we are interested to find what is the eigen vectors. So if we're trying to solve this equation, you get minus of 2i v1 and minus of 4 v2 that equals to 0, and from second equation you get v1 minus 2i v2 that equals to 0. So here these two are similar because if we multiply by minus 2i, so this and this are remain same. Okay, so because if you multiply minus 2i, this becomes plus 4i square, and I square equals to minus 1, so this becomes minus 4 of v2. So these two are same. Okay,
finally, from this equation, we get V1 equals to 2I V2. So if we consider V2 be any A, so in that case, V1 equals to 2AI. What is your vector? So this vector is basically V1, V2. So here you can write in this form. So if we take A is common, so this is 2I and 1. Okay, so here the first eigenvector corresponding to 2I, this becomes 2I and 1. Okay, this is your first one. So similarly, if we try to find what is the eigenvector corresponding to second eigenvalues, so here if we take lambda equals to minus 2I, so this becomes plus 2I minus 4, 1, and this is plus 2I, this equals to V1 and V2. So this multiplied V1, V2, this equals to 0, 0. This corresponds to minus 2y, this. Okay, so if we solve this equation, so here you get 2I V1 minus 4 V2, that equals to 0, and here V1 plus 2I V2 equals to 0. So if you multiply by 2I, so here 2I is 4I square, that is minus 4. These two are same. So here we can, from this equation, you get V1 equals to minus 2I V2, and if V2 equals to any real A, so V1 is minus 2AI. Okay, so what is your V is, this is basically A, this is 1 and minus, okay, so this is V2 is 1, okay, so this means this becomes minus of 2I and 1. So these are the eigenvectors. Okay, so here, what is your matrix P? P be the matrix made by the eigenvalues corresponding eigenvectors corresponding to these eigenvalues. Okay, this is the first one is 2I and 1, and second one is minus 2I and 1. Okay, so here these are the eigenvectors. So the matrix made by the eigenvectors is your matrix P. Okay, so here you can get what is matrix P here. So matrix P is this thing, not this. Okay, तो ये चीज हमारी गड़बड़ थी कि जो हमने ये लेकर के सारे कैलकुलेशन किए. तो अब आपको क्या करना है, यहाँ से आप आइगनवेक्टर्स निकाल लें और सेम चीज करनी. प्रोसेस तो आपको हमने बता ही दिया, और अगर देखना भी हो कि क्या होगा, तो यहाँ से हम try to find the what is the P inverse, so we have to find what is the modulus of P. So this becomes 2I minus and minus, this becomes plus, this becomes 4I. 4I is the mod P. So what is the P inverse? P inverse is 1 by 4I, and matrix, this is 1, and here this becomes minus 1, here this is 2I, and here 2I, this matrix transpose, so this becomes the 1